Greetings everyone. Today we'll be discussing on the topic causes of poverty in India. Now I'll be covering multiple reasons. In brief, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे because now हर एक टॉपिक से रिलेटेड दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फिर now that would be a whole detailed video. If you want that we can do that, but यहाँ पे we'll discuss each one in brief. Now if we are talking about causes of poverty in India, now, the first thing is there are two extreme perspectives on the basis of which we can analyze the causes of poverty. पहला तो है old, दूसरा है modern, right? Now, one view of poverty is that it is, providential and it is the result of an individual's past karma. Okay? कि पुराने कर्म के उस पे तुम्हें इस जन्म में ऐसा मिला है तो this is your reality, right? या फिर जिसे हम कहते हैं पाप या सिंस. दूसरा जो व्यू है वो बताता है कि poverty is the result of individual's failure of working abilities or due to his lack of motivation. ठीक है. Now describing the richness of a rich person in terms of उसकी कि ये उसकी destiny थी, ये उसका भाग्य था, and the poverty of a poor person in terms of कि lack of abilities serves the economic interest of the rich people as they escape paying high taxes to be used for uplifting the poor. Right? Now, one modern view links poverty with factors which are beyond an individual's control, and the other describes the functioning of social systems in the society as they cause poverty, as the cause of poverty. Okay, now there are various other causes like individual, culture, or subculture of poverty and social structure in which we will not delve into. We will be delving into the main focus causes. Okay, now the first is rapidly rising population. ठीक है. Rapidly rising population, obviously India अब top पे आ चुका है. पहले second पे काफी time से था. Now it is on top. Now population of India मतलब काफी ज्यादा increase हो गई है, right? Average अगर देखा जाए तो around 17 million people are added every year to its population, which raises the demand for consumption goods considerably, obviously, because the जितनी ज्यादा population increase होगी, it's obvious that the demand of consumption will increase, right? Product and which will lead to प्रोडक्टिविटी. ठीक है, और ज्यादा मतलब प्रोडक्शन चीजों का और होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी सामान की तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा. नाउ लो प्रोडक्टिविटी इन सेकेंड पॉइंट इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. नाउ द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज लो. क्यों हो जाता है लो? ड्यू टू सब डिवाइडेड एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स. आई होप यू नो दिस. एंड लैक ऑफ कैपिटल ऑल्सो. ठीक है, कैपिटल उतना नहीं है. होल्ड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स मतलब काफी बड़े एरिया में लैंड नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो लैंड फार्मर्स उन सबके पास होती है, और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं सबके कल्टीवेशन के, और जिसमें इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर का. कुछ फार्मर्स को भी नहीं पता होता है कि कैसे वो क्या और अच्छा यूज कर सकते हैं जिसमें दे कैन गेट हाई यील्डिंग क्रॉप्स, या उनकी प्रोडक्टिविटी वो अच्छी हो सकती है. दे आर अनअवेयर ऑफ इट and they continue to use the same methods. Say for instance there are farmers जो ये सोचते होंगे कि if they are using fertilizers on regular basis, this will also increase the productivity of land. But on contrast, the reality is that slowly and gradually the land starts to degrade, right? So in that manner as well. Next is underutilized resources. This. Now what happens in this? अब underemployment and disguised unemployment, इनका existence होना ही मतलब of human resources and underutilization of resources, what has it resulted in? It has resulted in low production in agricultural sectors, right? And what has it brought? This has brought a downfall in their standard of living, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो resources हैं हमारे, या तो वो उनका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, या तो अगर हो रहा है तो दे आर नॉट प्रॉपरली बीइंग यूटिलाइज्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, नाउ अगर ये देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है,
ठीक है, जो रेट है ये रिक्वायर्ड लेवल के नीचे ही रही है मोस्टली. देयरफॉर यहाँ पे देयर ऑलवेज परसिस्ट अ गैप बिटवीन व्हाट, बिटवीन द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जो गुड्स और सर्विसेज की जरूरत होती है. मतलब अवेलेबल कितना है और कितने की जरूरत है. फाइन. एंड नेट रिजल्ट क्या होता है? नेट रिजल्ट निकल के आएगा द मोस्ट जो प्रॉब्लम है हमारी, पॉवर्टी. ओके, द गैप between the gap level between the availability and requirement of goods and services results in poverty. Now next we will talk of is low rate of economic. Okay, ये तो हमारा हो गया. Next is price rise. Okay, now obviously पैसे जितना ज्यादा बढ़ेंगे obviously जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा, जो below poverty line है वो पता नहीं कहाँ ही जाएगा. So the continuous and steep price rise has obviously added miseries to the poor. ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी सब कुछ महंगा था, अब और चीजें महंगी हो गई हैं. It has benefited a few people in the society and the persons in lower income group, and they find it difficult to get their minimum needs. I hope the point price rise is the most easiest for you all. ठीक है, there can be multiple examples जो कि आप दे सकते हो. ठीक है, like नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ना, बाकी सारी जो बेसिक नीड्स हैं उनका प्राइस बढ़ना, that that wreaks and havoc on the people. Okay, especially the ones जिनका दिन में भी अगर 100-200 की कमाई नहीं हो रही. Next we have a shortage of capital and able entrepreneurship. ये क्योंकि देखो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है entrepreneurs, they are really important. ठीक है now, और entrepreneurs के पास कैपिटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Now if there will be capital and able entrepreneurship की शॉर्टेज होगी तो प्रोडक्शन सप्लाई में शॉर्टेज होगी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. सो कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ, बट these are in short supply, making it difficult to increase production significantly. Okay, now next is we have unemployment. Okay, the major, देखिए इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके टिप्स पे हो जाएंगे. अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, सोशल फैक्टर्स या पॉलिटिकल फैक्टर्स ये हम अभी पढ़ेंगे. सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली पॉवर्टी का कॉज है. अनएम्प्लॉयमेंट, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, देयर आर मेनी हु आर स्किल्ड एंड दे आर स्टिल रोमिंग अराउंड जस्ट टू गेट अ जॉब जिससे एटलीस्ट they can fulfill their basic needs of everyday life. Okay, and then slowly and gradually move forward to other things, the other demands of their life. So unemployment, now the continuously expanding army obviously of unemployed is another cause of poverty, right? The job seekers, they are obviously increasing in number at a high rate. Okay, and then the expansion in employment opportunities वही है कि see like the one who are unemployed, right? There are various types of unemployed people as well. If you have studied this and if you want a video on this, we can make definitely. Now unemployment, नौकरियां जितनी नहीं है उतने ज्यादा लोग नौकरी लेने के लिए रेडी है, right? Even if you would check on the internet, you will find many videos where you will find that a lot of people are standing outside and creating a chaos for traffic and other, just because कि एक particular जगह पे is a vacancy and around thousands of people have gathered to get that place, right? All of them having skills, and now everybody is skilled, but who gets the place? That is the question. Next we have is social factors, right? Okay, let me underline this. Let me, yes, the social factors, right? Now, the social factors, obviously the social setup, right? And now it is still backward and is not conducive to faster development. जैसे कि इनहेरिटेंस के लॉज हो गए, सोशल सिस्टम ने तो ऑब्वियसली पॉवर्टी की मतलब सबसे ज्यादा रीढ़ अगर किसी ने तोड़ी भी है ग्रोथ की, ठीक है, द वन विच इज डिस्ट्रॉइंग द बैकबोन ऑफ इंडिया, द ग्रोथ ऑफ इंडिया is social factors mostly.
जैसे कि इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं, ठीक है, या कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में कितने सारे ये जो प्रेजुडिसेस हैं या जो स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, ठीक है, what they do is they put a restraint and they create hindrances in the way of faster development, and they also have aggravated the problems of poverty, right? There are many social factors. ये तो basic हो गए. आप if you will go deeper into this, you will unfold many pages कि कितनी ज़्यादा depth है इस point में. Okay. Next we have is political factors. Okay, now we have political factors. What in political factors? Political factors में poverty का क्या reason हो सकता है? Most important can be obviously, see, अगर if we are going back in the history, ठीक है, let's start with the Britishers coming, right? The Brits coming. Let's write Brits. Okay, writing बहुत अच्छी है मेरी. Now, the Brits coming, the Britishers obviously they started a lopsided development in India and reduced Indian economy to a colonial state, right? अच्छी खासी इकोनॉमी थी हमारी, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन नहीं. But the Britishers reduced it to a colonial state. Now what did they exploited the natural resources to suit their interests and weaken the industrial base of Indian economy, right? हमारे ही प्रोडक्ट्स यहाँ से ले जाके वहां पे मैन्युफैक्चर करके हमारे यहाँ लाके बेचना, ठीक है, कितनी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म कर देना, हर जगह से प्रोडक्ट्स यहाँ के सारे सामान उठा के अपने ही म्यूजियम में रख लिए उन्होंने. बहुत सारे रीजंस हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम देन पॉलिटिकल फैक्टर्स इंडिया में अब अगर देखें, इंडिपेंडेंट इंडिया में द डेवलपमेंट प्लान्स were guided for political interests, right? So the planning has not been successful to tackle the problems of poverty, which we studied. And if you have any doubt regarding any of this, you can definitely ask in the comment section, and definitely either write it down, or you can pin any point that you did not understood this or any other thing. Till then, if you think any other point should also be mentioned in this and it also has the same weightage, just like the points mentioned in the video, do comment. Till then, goodbye, take care.